আটাইকে নমস্কাৰ আৰু সকলোকে আদৰণি জনাইছো to my channel 10 minutes literature with myself your friend Rishikesh. So in the last two parts of Notes on Nationalism by George Orwell, we tried to discuss the basic differences between nationalism and patriotism as well as the distinctive features of nationalism. So in today's part we're going to discuss the types of nationalism, mainly positive nationalism, transferred nationalism and negative nationalism. But all these three types carry various types of nationalism within it, and we're going to discuss about all those types of nationalism thoroughly in the next 10 minutes. So let's not waste more time and let's get it started. So the first type of nationalism is positive nationalism, और इसके अंदर हम neo-Toryism, Celtic nationalism and Zionism discuss करेंगे. So the real motive force of neo-Toryism is giving it its nationalistic character and differentiating it from ordinary conservatism. It can also be termed as the desire of not recognizing that British power and influence have declined. So जैसे कि आपको अभी पता चला ये nationalism ब्रिटेन से belong करता था, and British people they had the audacity of not recognizing that British power day by day decline हो रहा है, या फिर ये मिलिट्री पावर हो या फिर पॉलिटिकल पावर, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थे. एंड दिस न्यू टोरिस्ट दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ रशिया एंड अमेरिका. सो यू कैन से दिस न्यू टोरिस्ट वर एंटी रशियन और एंटी अमेरिकन. सो वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश मूवमेंट वर वेरी मच सिमिलर. It was laid on the foundation of hatred against the British people. So we can consider all these three types of sentiments under Celtic nationalism. So according to Celtic nationalism, they were very much pro-Russian because Russia was against Britain, and anything against Britain would be considered as a ally or friend of Celtic nationalists. So there were some lunatic Celtic nationalists. कोई इतने भी पागल थे that they were pro-Nazis, or they were highly appreciating whatever genocide was conducted by Nazis under the leadership of Hitler. Although Zionism did not carry or did not possess any sort of special characteristics, but there is a distinction between the Zionism in United States and Zionism in Britain. So जो जायनिज्म या फिर जायनिस्ट लोग थे अमेरिका के, वो ब्रिटेन से ज़्यादा ब्रूटल और ज़्यादा रूथलेस थे. तो जायनिज्म को थोड़ा सा इन अ वे नेगेटिव कॉनोटेशन दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू अमेरिका. सो द सेकेंड टाइप ऑफ नेशनलिज्म इज ट्रांसफर्ड नेशनलिज्म, और इसके अंदर मैं कम्युनिज्म, पॉलिटिकल कैथोलिसिज्म, कलर फीलिंग, क्लास फीलिंग एंड पैसिफिज्म के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. सो कम्युनिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट whose ultimate goal is to establish a socio-economic order structured upon the ideas of common ownership of the means of production and the absence of social classes, money, and the state. So according to communism, they had a belief that the society can be run equally among various classes, and according to the communists, there should not be any classes in the society. It should be a classless society. So according to them, किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के पास पूरा ओनरशिप नहीं रहना चाहिए. द ओनरशिप शुड बी इक्वल अमॉन्ग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी. On the other hand, political Catholicism was a political or cultural movement which promotes the ideas and social teaching of the Catholic Church in public life through government action. So that means political Catholicism एक तरह का बिलीफ था जिसके थ्रू चर्च, बेसिकली कैथोलिक चर्च में जो भी टीचिंग्स या फिर आइडियाज दिया गया था उसको लोगों के बीच में स्प्रेड करना. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि जब लोग उस आइडिया को एक्सेप्ट करने से मना कर देते थे तो उनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन या फिर मिलिट्री एक्शन भी लिया जाता था. सो दैट वाज द नेगेटिव साइड ऑफ पॉलिटिकल कैथोलिसिज्म. एंड पॉलिटिकल कैथोलिसिज्म पहली बार आपका प्रूशिया में दिखा गया था. प्रूशिया इज नाउ नोन एज जर्मनी. वहां पर पहली बार ये चीज 19th सेंचुरी के टाइम में पॉलिटिकल कैथोलिसिज्म देखा गया था. सो पैसिफिज्म काफी हद तक पॉलिटिकल कैथोलिसिज्म के साथ सिमिलर था, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वाज दैट पॉलिटिकल कैथोलिसिज्म it emerged in Catholic Church in Prussia, whereas
Pacifism was initiated by some obscure sects who completely rejected the Western civilization and the Western model of democracy. इसके बाद ही हम लोगों को मिलता है कलर फीलिंग, एंड इट इज नथिंग बट वन सेट ऑफ बिलीफ दैट वन रेस इज सुपीरियर टू द अदर रेस, जो हम लोग लास्ट 600-700 साल से देख रहे हैं, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द व्हाइट कम्युनिटी एंड द ब्लैक कम्युनिटी. सो बेसिकली अगर हिस्ट्री में हम देखें, दिस color feeling has been used by white community in order to show their dominance or in order to oppress the black community. हालांकि ब्लैक कम्युनिटी ने ये कलर फीलिंग यूज किया इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू देयर राइटिंग, थ्रू देयर इमोशन, और उन्होंने रेट्रीब्यूशन लेने की कोशिश की, या फिर दे ट्राइड टू टेक रिडेम्पशन अगेंस्ट द व्हाइट कम्युनिटी. इसके बाद हम लोगों को मिलता है क्लास फीलिंग. So among the upper class and middle class intellectuals, there is a belief of superiority of the proletariats. They think that proletariats' glory and hatred of the bourgeoisie often coexist with ordinary snobbishness in everyday life. So the third and last type of nationalism is negative nationalism, और इसके अंदर हम एंग्लोफोबिया, ट्रॉट्स्किज्म एंड एंटीसेमिटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start with एंग्लोफोबिया. So Anglophobia is the feeling of hatred towards England and its people. अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एंग्लोफोबिया का डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सेल्टिक नेशनलिज्म के साथ सिमिलर है, बट द मेन डिफरेंस इज दैट जहां पर एंग्लोफोबिया में द होल एम्फेसिस वाज मेड टुवर्ड्स हेट्रेड फॉर इंग्लैंड एंड इट्स पीपल, सेल्टिक नेशनलिज्म में आपका ज्यादा एम्फेसिस डाला गया था अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप के कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए. तो वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो लोग थे, उन लोगों के दिल में एक हेट्रेड तो था टुवर्ड्स इंग्लैंड, बट साइमल्टेनियसली या फिर पैरेलली दे ऑल्सो ट्राई टू अपलिफ्ट देयर ओन कम्युनिटी सो दैट दे कैन टैकल एनी टाइप ऑफ फोर्स. सो उसके बाद हमको मिलता है एंटीसेमिटिज्म. So anti-Semitism is the quest for eugenic blood that led to the hatred and genocide of more than 600,000 Jewish people. And this sense can be termed as anti-Semitism. So, anti-Semitism basically एक feeling था of hatred towards the Jewish people. And it was the quest for, searching the eugenic blood. That means the most noble blood among all the people. So, इसके वजह से बहुत सारे Jewish लोगों को genocide face करना पड़ा back in Europe under the leadership of Adolf Hitler. So that was the sentiment which was related with anti-Semitism. Lastly, we're gonna discuss about Trotskyism. So Trotskyism का definition इतना loosely दिया गया था कि आप सोशलिस्ट हो या फिर एनार्किस्ट हो या फिर लिबरल हो या फिर डेमोक्रेटिक हो, आप सब तरह के लोगों को इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो. लेकिन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रॉट्स्किज्म वाज टू स्प्रेड द डॉक्ट्रिन ऑफ कार्ल मार्क्स in order to show hostility against the regime of Stalin. क्योंकि उस टाइम में स्टेलिन और ट्रॉट्स्की के बीच में ऑलमोस्ट एक कोल्ड वॉर के जैसा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन ब्यूटीफुली डिपिक्टेड बाय जॉर्ज ऑरवेल इन वन ऑफ हिज बुक द एनिमल फार्म. सो आई वुड आस्क यू और सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट बुक इन ऑर्डर टू witness one of the darkest phase of Communist Party during that time between Stalin and Trotsky. So this brings end to our week-long discussion about Notes on Nationalism by George Orwell. I hope you have been able to understand each and every definition, characteristics and types of nationalism. फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जॉर्ज ऑरवेल का जो नोट्स ऑन नेशनलिज्म का ओरिजिनल एसे है वो एक बार आप पढ़ के देखिए. इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेशनलिज्म. इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, इधर आपको वो ओरिजिनल बुक मिल जाएगा. एंड अगर आपको ये वीडियो और इसका जो बाकी 2 पार्ट था वो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अगर अच्छा नहीं लगा फिर भी आप डिसलाइक कर दीजिएगा. और आपको जो भी टॉपिक मुझसे डिस्कशन करते हुए आपको देखना है वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में डाल लीजिएगा. एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक you to subscribe my channel. The more the subscribers would be, the better would be my confidence to explain all these topics. So with the promise of coming back again, this is your friend Rishikesh signing from your own channel
10 minutes literature.